Hello everyone, welcome to PRATHAM Test Prep. My name is Ashish Bhargav and here we have with another episode of daily news analysis that we do from Monday to Friday. My friend, this is very important to understand that the importance of current affairs, because what exactly we discuss in current affairs in newspaper analysis, we discuss about all the important aspect of an exam like national news, international news, economy-based news, sports-based news, science and tech, personal news, summits and current affairs, and miscellaneous. And apart from that, we also discuss about Supreme Court verdict, any amendments, any bills which is in the parliament that we also discuss in news analysis. Before we start, I just want to know, please let me know if my voice is audible. Am I visual to everyone? Am I audible and visible to everyone? Okay. So, my friends, कैसे हैं आप सब? I hope you guys are doing well. Please manage for today because मुझे थोड़ी cold है and मेरी voice थोड़ी सी kind of So here is the quote: nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today, make a new ending. And we'll ask you the questions of the day. At the end of the session, we'll ask you the 5 questions. And here is quick tips. ये जो आप देख रही हैं, this is a great symbol of empowerment. Here the name is Divyakirti Singh, that makes history as the first Indian woman to receive Arjuna Award in equestrian. So, wherever the word is superlative word, the first woman, second, third, so make sure this is the very first time taking initiative. Such kind of questions will frequently ask in your exam. So, आपको पता होना चाहिए कि wherever the word is first, make sure this is likely to ask in your exam. So, this is a great symbol of women emancipation. If you talk about in our country, that's a very great initiative by the government of India as well. Here, the article is talking about the Indore, Surat named cleanest city, Maharashtra cleanest state. For Indore, this was the 7th year in row that it was named cleanest city. 7 time ऐसा हुआ है, इसे स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स मिला है इसे. स्वच्छ मतलब क्लीन कैंपेन इंडिया जो हमारा स्कीम था. Surat, which was been the 2nd place for the past 3 years, won the top award for the first time. So, President Draupadi Murmu ने represent किया, यहाँ पर देख सकते हैं. All India Cleanest City rank 1 award to Surat during Swachh Sarvekshan Award 2023 in New Delhi. कब? January 11th को. यहाँ पे Maldives के बारे में फिर से. The outrage over Maldives minister remarks against Indian has been growing, with many calling for a tourism boycott of the country. Even a male tries damage control. I mean, क्या थी कहानी? देखो मैं कितनी बार आपसे डिस्कस कर चुका हूँ इसे. If you talk about sorry. देखो मालदीव के पार्लियामेंट को बनाने में भी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत If you talk about Maldives, that has been the news for all the wrong reason for the past some time now. The new government led by President Mohammad Muzi, उन्होंने boycott India का स्लोगन दिया, ठीक है, and asked India to withdraw military personnels, choose China for one of its first overseas visit, and they moved to scrap a key pact involving survey of water. My friend, बात करें Maldives की population की, और so in short, क्यों सपोर्ट किससे मिल रहा है? चाइना से. इंडिया ने, अगर आप इनकी पास्ट इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस को देखें तो हमने हमेशा इनको सपोर्ट किया. द टाइम वंस मालदीव्स गॉट इंडिपेंडेंट, उस टाइम में भी हमने इनको सपोर्ट किया. बट कहते हैं ना माय फ्रेंड्स कि आप जिसको जितना सपोर्ट करोगे वो आपके उतने पीछे जाएगा, वो आपके अगेंस्ट जाएगा. सो यहाँ जो 3 लीडर्स थे जिन्होंने की
sarcastically comment किया था. First, what at stake? So after the British relinquished control of chess चले गए यहाँ से, ठीक है. So India established diplomatic ties in mail earlier. The Indian High Commission in Colombo till 1978. ये जितने भी आप कंट्री देख रहे हैं, आइलैंड कंट्री, भूटान, नेपाल, जिनके साथ हमारे अच्छे टाइज हैं, उनको हमने हमेशा सपोर्ट किया है. सिंस 1980 से अगर बात करें कि इंडिया हैज़ हैड एन एम्बेसडरियल रिप्रेजेंटेटिव इन आइलैंड. सो आफ्टर द डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन टुक प्लेस इन 2008 में India has built deep relationship with all relevant stakeholders, players in, if you talk about in terms of politics, if you talk about military, if you talk about business and civil society. Of networking with the local populations is one of the key elements of India maritime security calculus, and this security concern and scenario in India by peripherally in the Indian Ocean is very much linked to the maritime. आपको जान के हैरानी, 70% ऑफ मालदीव्स डिफेंस ट्रेनिंग इज डन बाय इंडिया. जो उनके कंट्री में 70% आपका डिफेंस ट्रेनिंग होती है, वो इंडिया देता है उन्हें. तो एक कंट्री के रिलेशंस के हिसाब से देखो, जो उनके दोनों कंट्री के बीच में स्ट्रैटेजिक रिलेशन है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है. Okay, so once again there was a network glitch, my friend. So what we were discussing, yeah. So scenario ये है कि 70% जो है आपका मिलिट्री डिफेंस जो ट्रेनिंग होती है, that is done by India, मालदीव्स के लिए. So India has trained over 1500 Maldivians National Defense Force, जिसे MNDF पर्सनल्स कहते हैं. So भारत भी ये चाहता है कि टू सेट अप अ कोस्टल रडार सिस्टम इन मालदीव्स विद अ व्यू टू कीप एन आई ऑन एक्टिविटीज इन इंडियन ओशियन. सो यहाँ पे जो इंटरफेरेंस है वो चाइना के साथ है. तो चाइनीज हैव ऑल्सो वर्कड देयर वे इन द पास्ट 15 years. Maldives opened an embassy in the country in 2009 and China opened its embassy recently as in 2011. But with this investment, जो Jinping है वो that trying to power push and Belt and Road Initiative. So India is obviously concerned at the expanding Chinese footprint there. While Mohammad Nasheed first started the engagement with China, Abdullah Yamin took it up several notches during this term in 2018. And जो Musi है, who was the minister of Yamin government, is very as carrying forward his mentor policy. So India needs Maldives on its side to secure its maritime periphery, keep an eye on the Indian Ocean and check the influence of China in its neighborhood. So India supplies Maldives with its very essential rice, spices, fruit, vegetable and poultry. So of course, यहाँ पे एक चीज़ समझनी होगी, it supply medicine, not just everyday medicine but all critical and care and life-saving drugs. India has been the main pillar of help for Maldives in the times of crisis and distress. When a tsunami struck in the island in 2004, India was the first to send in help. Again 2014, when the Mail suddenly had a drinking water crisis, जब वहाँ पे Maldives में drinking water crisis थी, इंडिया ने उस टाइम भी सपोर्ट किया था Maldives को. So when there was a military coup in 1988 में military coup लगी थी Maldives में, again then President Abdul Gayoon, India sent troops in fight the combatants, और भारत ने उनकी मदद भी की थी उस टाइम में. So it is overall context, it is the interest of both India and Mail to dial down the current tensions by assuaging each other's concern and cooperating what matters most of both sides. ये अगेन सेम आर्टिकल है कुछ. अब यहाँ पे बात करें इंडियन टूरिज्म की, तो यहाँ पे मालदीव्स के साथ द शेयर ऑफ इंडियन टूरिस्ट टू मालदीव्स ओवर 20% ऑफ द इकोनॉमी डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म इज अमंग द हाईएस्ट. सो यहाँ पे ड्यूरिंग अ रिसेंट विजिट टू लक्षद्वीप, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी shared photos of his trip in social media. Several users responded
comparing the island with the Maldives located further down south in the Indian Ocean. And this became a diplomatic row when three deputy ministers of youth, Malsha, Marian and Mahzoon. तो ऑब्वियस दैट जो उनकी इकॉनमी है, डिपेंडेंसी है उनकी उस चीज़ के ऊपर, जो टर्म्स में देखें तो यहाँ पे रशिया, इंडिया, चाइना, यूके, बहुत सारे कंट्री में डेटा वहाँ पे शो करा हुआ है कि अराउंड रेवेन्यू की बात करें यहाँ पे Maldives रुपया एंड द टूरिज्म इंडस्ट्री कंट्रीब्यूशन ऑफ द कंट्री जीडीपी एट द कांस्टेंट प्राइस फ्रॉम 2016 to 2022. Why international law is matters? So यहाँ पे Israel bloody war in Gaza has caused unprecedented death and destruction. Screaming children have strained humanity, collective consciousness. This was started when the world was still reeling from the shock of Russia brazenly illegal invasion of Ukraine, which too has caused devastation. So these two wars have led many to pronounce the death of international law, especially the rule prohibiting the use of force in international relation, the crown jewels of United Nations Charter of codified in Article 2, Clause 4. So you should to understand that it is also a fact that unlike sorry. जो यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ है कंट्री के बीच में, डिफरेंट कंट्री के बीच में, दैट शोज लैक अ ग्लोबल पुलिस फोर्स टू इनफोर्स सक्सेसफुली. एंड अगर यहाँ बात करें डिफरेंट स्टेज की बात करें, यहाँ पे नेशनल कोर्ट्स जो होते हैं दैट ऑफन यूज इंटरनेशनल लॉ टू इंटरप्ट डोमेस्टिक लॉ टू इनलार्ज इट्स कंटेंट. उसमें फिर यहाँ पे जो आईसीजे का रोल है जो हमने डिस्कस किया था अभी प्रीवियस आर्टिकल में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एंड उसके बाद जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, ठीक है, उनके बीच में ये लॉ किस तरह इंप्लीमेंट की जाती है. नाउ इस नेक्स्ट में आप देखेंगे इंडिया इज स्टैंडिंग इन ग्लोबल इंडाइसेस. ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में 146 पे है, 146 आउट ऑफ 146, 127. ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111. एंड मेक श्योर इंडिया हैज वर्ल्ड हाईएस्ट चाइल्ड वेस्टिंग रेट एट 18.7%. प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है माय फ्रेंड, इसके क्रक्स में देखें तो 1973 में. 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को इंट्रोड्यूस किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज प्रोजेक्ट टाइगर, whose status has silenced since rapidly ascended. So the origin of the Project Tiger 1972 में India enacted the Wildlife Protection Act WLPA, which introduced the new species within notified forest called national parks, where the rights of forest dwellers were removed and vested with the state government. मतलब नेशनल पार्क्स में उनको जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे उनको जाना बंद कर दिया. So there were 9 टाइगर रिजर्व्स थे हमारे पास, 9 टाइगर रिजर्व थे 1973 में, over 915 स्क्वायर किलोमीटर, एंड टुडे देयर आर 54 इन 18 स्टेट्स. अभी कितने हैं? 54 है. 54 टाइगर रिजर्व्स हैं कितनों में? इन 18 स्टेट्स में. अब हम क्विक टिप्स में बात करेंगे. क्विक टिप्स में आज का हमारा है बापू का हाथ. ये क्या है बापू का हाथ? किंग ऑफ एंशिएंट इंडिया हु प्रैक्टिस्ड बुद्धिज्म, बिंबिसार, अशोका, प्रसेनजीत, उदयसीन, कनिष्का एंड हर्षवर्धन. उसके बाद स्टेट इन इंडिया शेयरिंग बाउंड्री विद भूटान, सिक्किम, अरुणाचल, असम एंड बंगाल. ये मैंने आपसे बताया कि नोट्स बनाते कैसे, आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे इसको मैंने विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप्स से मैंने क्रिएट कर रखा है. आर्टिकल 15 टॉकिंग अबाउट डिस्क्रिमिनेशन, 17 अनटचेबिलिटी, 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, आर्टिकल 214 हाई कोर्ट, 51A फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 343 से 351 अबाउट हिंदी लैंग्वेज, और आर्टिकल 24 टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रंस बिलो 14 ईयर्स कैन नॉट वर्क. This is related to emergency, Article 352 about national emergency, 356 state emergency, and Article 360 about the financial emergency. Now it's question of the day.
अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन, इंडिया द 5th लार्जेस्ट रैंक प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड, इंडिया द 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। हम अगर यहाँ पे स्टील की बात करें तो हम यहाँ पे 2nd पोजीशन पे हैं आफ्टर चाइना के बाद, और ये 5th रैंक नहीं है, तो ऑब्वियस इंडिया के जो रैंक है यहाँ पे वो क्या है माय फ्रेंड, ये 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ग्लोबली। सो 7% प्रोडक्शन हम देते हैं पूरे वर्ल्ड में। सेकेंड क्वेश्चन में अगेन स्टैटिक टॉपिक के ऊपर है आपका, फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रिसाइडेड ओवर दादा भाई नौरोजी। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है स्टैब्लिश होती है 1885 में बाय WC बैनर्जी, नॉट दादा भाई नौरोजी। 28 से 31 दिसंबर के बीच में ये पहला सेशन होता है, कहाँ पे, बॉम्बे में। तो पहला हमारा स्टेटमेंट गलत है, ए इज राइट आंसर बिकॉज आस्किंग अबाउट इनकरेक्ट वन। ब्रॉडबैंड एंड ब्रॉडकास्ट में क्या डिफरेंस है, बी इसका राइट आंसर है। 4th वन आपसे पूछा है, आफ्टर लिबरलाइजेशन इंडिया हैज अंडरगॉन स्ट्रक्चरल चेंज इन इट्स इकोनॉमी। इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब स्ट्रक्चरल चेंज in contribution of different sector of economy, C is the right answer. And here it is the last question is green cover forest, green cover index that is released published by, here we have 4 options: Forest Survey of India, National Horticulture Board, Niti Aayog, and none of the above. Niti Aayog, which means this is national institution for transforming India. सो ये बेसिकली इनिशिएटिव है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। So this is all about the session, dear students, and I hope that you enjoyed the session a lot. If you have any questions regarding this, please let me know in the comment section. Make sure that if you are new in the channel, please subscribe our channel and do not forget to press the bell icon so you will get the notification of all our Pratham Test Prep mentors. Stay tuned. We'll meet you on Monday. Till then, bye-bye and take care.